So Nikhil, so tell us about yourself. I am NIKHIL Nagaria. And I am interested in research, especially in math. So that's why I like to write books. And how much did you score in your JEE mains? 99.39%. Okay, good. So Nikhil, what is your favorite topic in mathematics? Number theory, and Okay. Euclidean geometry. Number theory and Euclidean geometry. Synthetic Euclidean geometry. Okay, number theory and Euclidean geometry. Okay, great. And then anything from the JEE portion of mathematics? Not really. Like Calculus कुछ नहीं अच्छा लगता तुम्हें? calculus is interesting, but I am not very comfortable with the analysis proofs. Okay, great. So नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं. हाँ, नंबर से ही स्टार्ट करते हैं एक पर मैं दूसरी क्वेश्चन. हाँ जी. ठीक है, तो आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विद यू. So this question is actually mixed of number system and little bit of quadratic. So we see question says if kx square minus 4x plus 9 equal to 0 has integral roots only. Find possible values of k. So like I just solve on my notebook and then tell. Yeah. You do it your efforts, and then when you are done, then you can tell us. So I solved it, and my answer is no possible value of k. No possible value? No possible value. So why you are saying so that no possible value? So first, I calculated the determinant, which is 16 minus 36k. And if we want this equation to have integral roots, this should be a perfect square. Are you thinking that k should be integer? Yeah, what's that? Are you thinking that k should be an integer? Because if k is not integer, then also it is possible that this equation may have integer roots. Okay, so now I did without assuming k. I did it with assuming k is real, and my answer is the same, k, and no possible values of k. Okay, answer is same. Can you elaborate? What's that? इसको explain कर सकते हो? Yes, sir. So the two roots are integer, so their sum should be also be an integer. So 4 over k is an integer. Okay. And similarly, 9 over k is also an integer. And what you said? 9 over 9 upon k. Now, so k must be rational, because if k is irrational, 4 over k cannot be an integer. Now, if we let k is k equal m over n for coprime m and n, then we get that n divides 4 and n also divides n. M divides 4. And denominator. Numerator. Yes. M divides 4 and m divides n. And m divides n. So m can only be 1 or minus 1. Okay, you are saying m divides 4, m divides n. 9 you said, or n? So m can only be 1 or minus 1. M is equal to 1. Now,
Now we just do for each case, if m is equals to 1, then we put the value and multiply by n to get x square minus 4nx plus 9n equals 0. So, मुझे थोड़ी आवाज ब्रेक होकर के आ रही क्या है। क्या दोबारा रिपीट करना, क्या बोला? So now if m equals n, then we put k equals 1 over n in the quadratic. And so it If Why- m is equal to 1, m is equal to 1, then k is equal to 1 upon n. yes, sir. So it becomes x square minus 4nx plus 9n. Okay, minus 4nx plus 9n. And its determinant, we compute the determinant, which is 16n square minus 36n. Hmm. Now this should be a perfect square. Hmm. And now 4 divides LHX, so 4 must also divide n. So we can just let a new variable n equals to p and cancel the 4. Hmm. ठीक है. So then we get 4n square minus 9n equals Hmm. 6 square. And wait, I did a mistake. Wait. Your approach is correct, but I think you are not getting right conclusion. Yes, I did a mistake. Wait. Have you done Diophantine equations? Yes. Okay. Okay. So now I solved it, and should I just continue the solution from here? Yeah. So we have this, and now n divides LHS, so n must also divide n must also divide RHS. You're talking about this equation? No, 4n square minus 9n equals n square. Okay, ठीक है. So this small n should divide this capital n, you are saying? Yes, sir. Okay, so then we let n equals lambda small n, capital N equals lambda small n, and then we put it back, and we get 4n minus 9 equals lambda. just one. If small n is perfect square and it divides n dash square, because you are claiming n will divide n dash square, isn't it? Okay, then is it true that n will also divide n dash? No, it won't work. If n is prime, then this works, but if n is not, then Yeah. If it is perfect square or having some square term in its factorization, then I don't think it will work. yes. Okay, or maybe you can take the case that n is a prime, or maybe it has factors such that it is not having any square in it. Then I think this may work. So yeah, tell me, complete. So I just assumed this, and so my solution will work only if n is prime, and if n is prime, we will get the value k equals 1 over 3. Okay, so you're getting one value is 1 over 3. Okay, any other? And k. No, if n is prime, then no other solution. So, sir, I think there are two answers. Let me tell you the answer. There can be one more value, that is minus 1 by 4. What? There are two answers actually, 1 by 3 or minus 1 by 4. You can check. For minus 1 by 4 also we are getting the integral roots. It was a perfect square, so my proof didn't work for that case.
Actually, let me tell you, because although this question may not come, but the better approach could have been here. You can find 1 upon alpha plus 1 upon beta easily. Yes. Yes, sir. Okay. Now use Diophantine equation. This will give you what are possible values of alpha and beta. Yes, sir. Yes. But are you getting it? After that, how can we solve it? Then we can take 9m plus 9n on the other side and factorize. Yes. So this way, I think this can be done very easily. Maybe 90, 81 or something like that will come. So first you will find which alpha and beta are possible, and then I can find the case values. Yes. Yes. सर आप पूछो मुझे. अच्छा ये निखिल इसमें had k been an integer also, तो जो starting में तुम लगा रहे थे d is a perfect square, is it a sufficient condition or a necessary condition for integral roots? It's not sufficient. It's necessary. Okay. मैं एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री का क्वेश्चन. सर आप स्क्रीन में हैं. Can you see? Yes. So in a triangle AB is equal to AC, BAC is 20 degrees, BD is the angle bisector, O is the circumcenter. Find angle ADO. कैसे सोच रहे हो? What is the approach? So I first joined OA, OB, and OC. Okay. And okay, so now BAD, now OA and OB are equal. So angle ABO is also 10 degrees. And now BD is the angle bisector, so angle ABD is 40. Because AB. angle ABC is 80. ABC is 80, so ABD is 40. Yes. So OBD is 30 degrees. Okay, I'll give you a hint. AOD में साइन रूल अप्लाई करने की कोशिश करो. So this angle, this is 170 minus theta. ये हो ना? So AD upon sine 170 minus theta is equal to R upon sine theta. Theta is what we need to find. Can we write AD, R, and so on in terms of sides and eliminate and ultimately find an equation in theta? कोशिश करो. Yes.
AD का वैल्यू कितना होगा? AD is B square over A plus B. B स्क्वायर अपॉन A प्लस B। परफेक्ट। Yeah. और हम B अपॉन A भी निकाल सकते हैं? B upon A side root. So sin 80 अपॉन sin 20। Yes. तो यहाँ पे काफी कुछ B अपॉन A की टर्म्स में आ जाएगा। अच्छा, कैन यू ऑल्सो फाइंड R, कैपिटल R इन टर्म्स ऑफ B? Capital R is 2B square over root of 4B square minus A square. इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी A B O में लगा लो कैपिटल R। सो ADB इन टर्म्स ऑफ स्मॉल b आ जाएगा, बिकॉज B अपॉन A का वैल्यू पता है। कैपिटल R भी टर्म्स ऑफ स्मॉल b आ गए, पुट करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द वेज टू फाइंड थीटा ऑर्गेनिक वे। मतलब एक दूसरा तो एक इनऑर्गेनिक कंस्ट्रक्शन है इसकी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचना, बट ठीक है निखिल, मेरी तरफ से तो ठीक है सर। आप ठीक है सर, आई थिंक मेरे ख्याल से तो अप्रोच काफी सही है निखिल, मतलब यू स्कोर्ड रियली वेल। मैथ्स में भी काफी अच्छा है, केवीपीवाई क्लियर है तुम्हारा, ऐसे क्लियर है तुम्हारा, जेई मेंस में अच्छा परसेंटाइल है। एंड तो आई डोंट थिंक इंटरव्यू में कुछ ज्यादा दिक्कत होगी, बिकॉज जो क्वेश्चन जो सामने आया, क्वेश्चंस काफी आसान पूछ रहे हैं, तुमने भी पता किया होगा। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन थोड़े से मतलब थोड़े से ट्रिकी साइड पे थे, तो इनसे मतलब इन्फ्लुएंस मत होना। बट वो हमने परसेंटाइल जब तुम्हारा पूछा था उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन का लेवल, दोनों क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर कर दिया था। But the questions that are being asked and that have been asked in ISI interviews, there are of much simple level, and I know you'll be able to crack it. The only thing is, एक तो इंटरेस्ट दिखाना स्टार्टिंग में कि मेरा रिसर्च ओरिएंटेड ही इंटरेस्ट है, एंड अनलेस एंड अदरवाइज आस्क्ड जेई मेंस परसेंटाइल पहले मत बोलना। Yes, sir. सर आपका? हाँ बिल्कुल, मतलब अप्रोच काफी अच्छी है। जैसे वो जो क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन था, वो नॉर्मली ऐसे ही हम लोग करते हैं, काफी तुम सही डायरेक्शन में ले जा रहे थे, बट फिनिशिंग टच नहीं हो पाया। वो शायद हो जाता तो आंसर भी आ जाता, मतलब वो क्वेश्चन ठीक था वो। और यहाँ पे भी आई थिंक बहुत परफेक्टली जा रहा था ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सर ने बोला, तो वो पॉइंट है कि जेई के बारे में ज्यादा पोस्ट मत करना कि मेरा ये परसेंटाइल है। मतलब वो पूछे अगर, तो बोलना है कि जेई का फॉर्म भरा है और हाँ रिजल्ट भी आया है ये, बट इंटरेस्ट मेरा एक सही तरफ है। ठीक है, दूसरा एक ये है कि जो तुमने यूजीए यूजीबी जो पेपर दिए होंगे, उनका अपना जो क्वेश्चंस थे जो हुए थे या नहीं हुए थे, उनको दोबारा से करके जाना। हो सकता है कि एक क्वेश्चन है वो तो कर ही लिए थे सारे सॉल्यूशन वगैरह। हाँ और उनका सब मतलब कर लिया कि जो भी इसमें थ्योरम यूज कर रहे हैं उनका प्रूफ वगैरह सब। हाँ ठीक है। और जो तुम टॉपिक बोल रहे हो ना कि जैसे मेरा ज्योमेट्री अच्छा है, मेरा नंबर सिस्टम अच्छा है, तो आप अगर, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि फ्री हैंड मिल जाता है टीचर्स को, तो बोलते हैं कि नंबर सिस्टम अच्छा है तो चलो फिर कुछ भी पूछ लो इससे। ठीक है, तो तुम हो सकता है कि एक दो टॉपिक बताने की जगह ये भी बोल सकते हो कि एक दो टॉपिक छोड़ के बाकी सब सेम है, या यू कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, तो ऐसा बोल दो कि यू कैन आस्क फ्रॉम एनीवेयर। जब तुमने बोला कि नंबर थ्योरी या फिर ज्योमेट्री, तो सामने वाले को मिलता है कि यार उसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन पुट करो तुम्हें, हम बोलो कि सब कुछ आता है। हाँ, सब मैं कुछ सेम आता है। मैं सब कुछ मैं सब कुछ ट्राई करने को तैयार हूँ। या एक दो टॉपिक जैसे तुमको नहीं लगता कि ये टॉपिक मेरे लिए अच्छा नहीं है, या कैलकुलस अच्छा नहीं है या कुछ भी, तो वो एक मेंशन कर दो कि सर ये टॉपिक में आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल, बाकी ये सब चीजें आप पूछ सकते हो इस तरह से। यस, बाकी तो परफेक्ट है सर। अभी जैसे बच्चे भी कम जा रहे हैं तो चांसेस तो फिर और भी बढ़ जाते हैं, है ना। और ज्यादातर जनता तो मेंस में लगी हुई है आजकल, तो इसलिए भी सही है। चलो, ऑल द बेस्ट निखिल। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट बच्चा, ठीक है, थैंक यू। ओके, मैं ये शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ इस रिकॉर्डिंग इसकी थोड़ी देर में, ठीक है। यस, बाय बाय। बाय, थैंक यू। बाय।